you should include some kind of movement in Okay, your daily lifestyle, because if we consider majority of population is working on a table and chair. true. Sedentary lifestyle. Yeah. Instead, they are sitting for 8 hours, 12 hours continuous on a chair. Okay, I tell you, human body is not made for doing this type of work, sitting on one place and doing the work. For those people, they can do stretching, maybe every Once 1 hour. exercises. Stretching, full body stretching. They could just sit on a chair and they could just stretch their arm, and it's any kind of stretching. Means which will make them relax also, which will let their body move also. What they could do is continuous bed rest. So they could on every half an hour span of time, if they want, they could set an alarm that they have to get up, they have to take a walk, maybe go to washroom, go for drinking water, maybe anything. So sitting continuously is not recommended. So hello everyone and welcome back to this Health is Wealth series on the Achievers Club podcast show. आज के हमारे गेस्ट आदर्श गंगावने भाई जो कि हमारे पॉडकास्ट शो पर वापस आए हैं, जिनके साथ हमने ऑलरेडी मेंटल हेल्थ पर पॉडकास्ट कर रखी है, बट इस एपिसोड में हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग जिम, योगा, बेसिक स्ट्रेचिंग, रनिंग एंड ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज. और साथ ही साथ हमने मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक जो कि है वेट गेन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. बिकॉज इफ यू सर्च आउट ऑन यूट्यूब और इवन ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको वेट लॉस के बारे में कंटेंट मिल जाएगा, बट आपको वेट गेन के बारे में काफी कम कंटेंट मिलेगा. सो प्लीज डू मेक श्योर दैट इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेन वेट और इवन इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लूज वेट, तो इस पॉडकास्ट में हमने दोनों ही टॉपिक्स को डिस्कस किया है. साथ ही साथ हमने प्रोटीन इनटेक के बारे में डिस्कस किया है. व्हाट शुड बी आर you can consider food intake and all of those activities. So please do make sure that you watch this podcast from the beginning till the end if you're looking forward to work on your health. And please do make sure that you watch this particular episode with at least one friend of yours or at least one family members of yours, because the family which learns together grows together. And please do make sure that you take full notes and enjoy this particular episode. Adarsh Gangawane bhai, welcome back to the Achievers Club podcast show. This is our part 2 on health. And honestly, health वाले series में मैं बहुत selected लोगों को choose करता हूँ. So you are the one with whom we are doing this health centric podcast second time. एंड पहले वाले पॉडकास्ट में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों होता है, और उस फेज में हम क्या फेस करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, एंड हाउ डू वी गो about getting out of those mental health problems, psychiatrist, taking help and many other things. But ये वाला podcast मैं physical health पे सोच रहा हूँ. My expectation is कि जो कोई भी इंसान, because right now we are in a sedentary lifestyle, दिन भर बैठे रहते हैं, whether it is office, whether it is entrepreneurship journey or any other thing as well. तो उसमें हम लोग अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान दें. 24 घंटे ही है, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, finances, family, every other thing. So it would be like physical health 101 podcast for our audience. And how are you? First of all, how are you? I'm good. I'm good. That's great. So पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यार right now it's buzzing कि यार physical health पे ध्यान दो, focus on your physique and so on. But ये physical health होता क्या है? We know about कि यार ये हमारी बॉडी है and we have to keep it active, ताकि हम लोग हमारे जो मसल्स हैं they are not like कि वो कुछ, let's assume after certain age अगर हमें कुछ लग रहा है तो वो फटाफट रिपेयर होना चाहिए. That's what I feel कि यार physical health वो होता है. What's your definition of physical health? Physical health is some, you should include some kind of movement in Okay. your daily lifestyle, because if we consider majority of population is working on a table and chair. True. Sedentary lifestyle. Yeah. Instead, they are sitting for 8 hours, 12 hours continuous on a chair. Okay, I tell you, human body is not made for doing this type of work, sitting on one place and doing the work. Human body is not made for that. Okay, if you go a little back, if you go for our ancestors, okay, they used to have a lot amount of physical activity in their life, in their daily course. Okay. Lot of physical activity they used to have. There was no such work that they will sit and they will do the work on as it is going today. Okay, so our body is not made for sitting and doing work.
Our body is made for making some kind of movement. So even if your life is sedentary, make some time for doing some sort of physical activity. It might be playing football, it might be going to the gym, it might be doing resistance training, it might be swimming, it might be running, it might be playing with your pet, anything it could be, but include some sort of physical activity. Okay, and now there is one thing, some people say me that I go to office and already I do a lot of exercise. I go walking to the office, I walk in the office, I did 1000 steps today and all and all and all. I came walking from the office and all and all, but you didn't did it with the intention of doing some sort of exercise. True. That was not an exercise for you, that was an exertion for you. Okay. Okay. So let's take a break here. You mentioned कि your intention also matters. कि ये जो Yeah. आपने walking किया, that is exertion, that is not exercise. So Yeah. physical health पे focus करते वक्त, whether we are going for gym, whether we are going for yoga, stretching, exercise, anything, intention matters the most. Intention matters. Yes. ठीक है. And you also mentioned कि you have to take some time out to do some activities. तो वो सम टाइम कितना? बिकॉज यू मेंशनड 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कितने घंटे एक्सरसाइज होना चाहिए आइडियली? At least 45 minutes to an hour. एंड उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? It could be anything. You could go play cricket on the ground. You could go have a football. Anything, any sport you like. You could do yoga and all. Means there, it's not like you do whatever you like. If you like going and hitting weights in the gym, if you want to do cardio, whatever you like. But there should be movement of your body. There Okay. should be movement of your body. Yeah, because अब ये जो कंटिन्यूअसली कहीं पे बैठे होते हैं या फिर बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं, वो लोग बीमार होते हैं. ट्रू. ठीक है, बीमार लोगों को बिस्तर पे बैठाया जाता है, चेयर पे बैठाया जाता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो चल नहीं पाते. बट आप तो चल पा रहे हो ना, तो ऐसा ना हो जाए कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो पैसा हम कमा रहे हैं और जिस तरह का काम हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज कहीं आगे जाके हमारे लिए हार्मफुल ना बन जाए. ठीक है, दैट्स सिटिंग एंड ऑल, मतलब आप पैसा तो कमा लोगे और फिर खर्च उसी बॉडी पे कर रहे हो. ठीक है, सो एटलीस्ट मेक एटलीस्ट एन आवर ऑफ टाइम इन योर होल डे फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ट्रू. और इसमें इंटेंशन क्या होना चाहिए? क्या हमारे मसल ग्रोथ होनी चाहिए, या फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, या फिर मेंटल हेल्थ पे फोकस होना चाहिए, और एनी अदर थिंग? व्हाट शुड बी द मेन इंटेंशन इनिशियली? No, the intention differs person to person. अगर मेरे जैसा कोई बंदा है, now I used to do workout with an intention of growing muscles first. ठीक है. Okay. Early stages, with the intention of growing muscles. Then And slowly, what was that year? What was that age? What was when I started in 2014, when I started working out. almost a decade? 2014. Okay. Almost. Yeah. So at that time, my intention was I have to build muscles, I have to grow and all that things. But as I went through some studies, then slowly I got to know that naturally a person cannot build huge muscles naturally. Okay. Naturally means if I have to go on a competitive level, I will have to take some external gears for that. Okay, so I got to know about that. Then my intention about gaining muscles changed. I don't want huge muscles now. Okay, I have gained much muscles. I have a lean body, but my intention is not gaining bulky muscles now. Okay, now my intention is I should stay active, I should look good, I should sit erect, or I should walk in a good position. My posture should be good. That is the only intention I have. My activeness, that is the only intention I have. With that intention, I go to gym every day. Okay, someone might have some other intention. It's like someone likes martial arts. Okay, so they have a they have a different intention for that, because they like martial arts, they like jumping, and they like that kicking and boxing and all those things. It's all about being liking also, and which keeps you fit also. It differs from person to person. People play footballs, people go for cricket matches and all. So it differs, completely differs. There is no such thing that what you should do as an exercise. Anything that gets your body up from any couch and you go and you just go all in with it. You take your body out of the comfort zone.
So That's any true. physical activity. That's true. तो एक एग्जांपल लेते हैं. You mentioned कि like 45 minutes to 1 hour, right? Hmm. So there might be a lot of people, I don't know personally anyone जिसका काम like 14, 15, 16 घंटे का काम है. They are just working and then eating and then sleeping. कुछ कुछ लोगों की Hmm. लाइफस्टाइल ये बन चुकी है. So how do we go about कि let's assume अगर Yeah. कोई बंदा या बंदी 15 hours का काम कर रहे हैं, बीच में क्या करना चाहिए? Can we do stretching? Can we do all of those things? क्या होना चाहिए? Yes. For those people, they can do stretching. Maybe every कौन 1 से hour. exercises? Stretching, full body stretching. They could just sit on a chair and they could just stretch their arm, and it's any kind of stretching. Means which will make them relax also, which will let their body move also. What they could do is continuous bed rahe. So they could on every half an hour span of time, if they want, they could set an alarm that they have to get up, they have to take a walk, maybe go to washroom, go for drinking water, maybe anything. So sitting continuously is not recommended. Get up in every half an hour, have some movement of body, do that. And if something some if the people who are working for so much of hours, okay, Hmm. if they want to let their body move, what they could do is, if they have an habit of waking up early, or they could build one. So they Mm-hmm. could wake up early, they could go for a walk, maybe with their spouse or their children, or after coming from work, if at night they could go for a walk after the dinner. Means any True. physical activity they could include. They could, if they have a pet, they could play with the pet after coming home. If they True. have children, they could play with the children. True. मतलब बच्चे तो होते ही यार, मतलब पेरेंट्स आए ड्यूटी से घर पे, मेरे साथ क्रिकेट खेलो, मेरे साथ ये खेलो, वो खेलो, घर में वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है True. ऐसा. And सो why it is not recommended to sit for so long, like 10 hours, 8 hours straight? Why it is not recommended? क्या होता है? Like for the shorter period of time हमें लगता है कि यार हम लोग हसल कर रहे हैं and so on. Even I used to do the same. अब बिल्कुल मैं ब्रेक ले लेता हूँ कि यार 1 घंटे का टाइम हो गया. I have to take a break, 10 minutes walk. I have to go drink water and so on. But why it is not recommended? Longer run में क्या effect होता है? Like go about that. the posture, the posture you sit in while Mm-hmm. sitting. Okay? Your body is not made for sitting like this and doing work on the laptop. Your body is not made for this. Your posture matters. Okay, the more the posture is bad, the more it affects your spinal. The True. more it affects your spine. The lumbar portion is the below five. There are five L1 to L5. We call it Uh-huh. lumbar bone. Okay, Yep. so majority of injuries happen there in the lower back. अच्छा. Majority of injuries. So sitting for too long leads to many kind of injuries in the lower back, Mm-hmm. and most of the times they cannot be treated. Most of the times, अच्छा. most of the time, क्योंकि लोअर बैक का जो है वहां का ऑपरेट करना, फिर वो सर्जरीज एंड ऑल दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. So it's better you consciously have some sort of exercise or some sort of physical activity while sitting. Okay, just get up and consciously remember that you have to sit straight. You don't have to bend down. Okay, Mm-hmm. but True. it's your laptop or your PC or whatever you are working on arranged in such a way that your neck remains straight. हाँ. Neck, it should हाँ. not bend. Okay, True. it should not like this. It should remain straight. Means the office I used to work, they used to put the boxes below the monitor, so अच्छा. that they could bring the monitor to the height of their eye level, so Mm-hmm. their neck remains straight. So this conscious practices needs to be done while हाँ. doing workout. Our human body is not at all made for sitting on one place and doing everything. You see, there is no animal that sits for so long, means on one place. They Yep. keep on, they have a moment and they eat, and they means they actually know how to live a life, healthy life better than us. That's true. Yeah. That's true. तो अभी जो डिकेड का आपका एक्सपीरियंस है, वील ब्रेक दैट डाउन. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अपने काम के साथ आइडियली, लाइक बिफोर माय क्वेश्चन, डू मेंशन कि यार जो जिम अगर करना है किसी को, लेट्स अज्यूम मुझे भी रीस्टार्ट करना है अभी, तो मॉर्निंग का टाइम आइडियल होता है बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क,
ऑफिस वर्क एंड सो ऑन हम लोग सुबह 6 बजे 7 बजे काम कर सकते हैं, और एल्स इट इज रिकमेंडेड कि इवनिंग में आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क एंड सो ऑन, व्हाट्स आइडियली रिकमेंडेड? See, it doesn't make any difference, means not a big difference. But अच्छा. what it is that if you start with the morning, हाँ. if you start with the morning, you spend the whole day with a great deal of activeness. हम्म. You stay a lot of active in the whole day. If you are going to gym after office, you are already stressed, but it's also good for relieving stress. True. Okay, if you are doing it after all, so that doesn't matter you work out in the morning or in the evening, until and unless you are working out. Means I say you work out anytime, but at least you work out or do any sort of physical activity. So that doesn't matter as much, but how much I know that somewhere I heard that the people who want to gain the weight, means Mm-hmm. they are told that means this is not completely true, means this is just a conception that those who want to gain weight, they could exercise in the evening, so that after exercising immediately we go for the rest, we go for sleep हाँ na. हाँ. So after exercise we immediately get rest. So that doesn't make anything, because I have not worked out, I rarely remember I worked out in the evenings. I always used अच्छा. to work out in the morning, because my rest of the day used to go very well when I used to work out in the morning. So that was my theoretical thing behind that. So yeah, that doesn't make much difference working out in the morning or evening. ठीक है. So let's take for example, if I restart my workout in the morning, और Hmm. मेरे पास आइडियली कितने घंटे का टाइम होना चाहिए इफ वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी? 1 hour, 1.5, 2 hours, हाउ मेनी hours? Uh, इफ माई इंटेंशन, लेट्स क्लियर द इंटेंशन हियर एज वेल, कि मुझे वेट गेन करना है या फिर मुझे वेट hmm. लॉस करना है, प्लस Hmm. आई नीड टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे. अगर बीच बीच में सेडेंटरी काम भी है, लेट्स अज्यूम 1 घंटे के 2 घंटे के जैसे मीटिंग्स होते हैं हमारे, तो बीच में अगर मैं ब्रेक नहीं ले पा रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूँ, स्टिल माई एनर्जी इज वेरी हाई. सो हाउ डू वी गो अबाउट दैट? कितने घंटे का आइडियल टाइम होना चाहिए एंड क्या इंटेंशन होना चाहिए? एंड even we will go further into exercises also. Hmm. Generally, in the for a normal human who is Yep. not who is living a normal life, who is not intentionally doing the workout for any competitive purpose. Hmm. Okay, for Yep. that person, 45 minutes to 1 hour workout is enough. 45 Okay. minutes to 1 hour, even if he's a beginner or he's doing workout from years, Yep. because overtraining is not recommended. Okay, there is one point where your muscle gets fatigued. Okay, and it Hmm. cannot lift more weight. And if you are forcing it to lift more weight, it might lead to injuries. Means there True. are people who overtrain and they suffer the injuries because they overtrain. Okay, so it is ideally recommended to 45 minutes to 1 hour workout. It's enough. Means your body also does not what we could say does not lift that much weight after that span of time. So it's we're talking about resistance training. Okay, Yep. half an hour, sorry, 45 minutes to 1 hour resistance training. And then the cardio part comes. Mm-hmm. Cardio, whatever, high intense interval training and all those things. Then after that, that comes. Yep. So And that's cool. talking about sports, this was all about gymming, because हाँ. in gymming we are hitting muscles. Okay, हाँ. we are concentrating completely on muscles. But while playing cricket, we are not concentrating on any muscle. Okay, so that is an endurance kind of exercise. Cricket, playing football, those are endurance exercises. So there it does not really matter that we have to play just for 45 minutes or all those things, because there person have an excitement to play and keep on playing. True. Okay, so there it does not matter that much that how much hours should I play or how much or and all those stuff. Means even if we consider dancing in Ganpati or in any marriage, people do not consider, they keep on dancing for 4 hours. True. Okay, so our intention is not building muscles. No? True. There is no tension created on our muscles. Okay, so that differs. That's true. तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेरा ही, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो अबाउट रीस्टार्टिंग माई जिमिंग जर्नी, तो अगर मुझे बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है एंड आई वॉन्ट टू गो अबाउट वेट ट्रेनिंग, my Hmm. intention is to gain muscle or to Hmm. lose muscles, like gain weight or lose weight and so on.
sorry, gain muscles or lose fat, because what like make me clear here, अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसमें मसल और फैट दोनों गेन हो सकता है, बट आइडियली पीपल गो फॉर मसल गेनिंग, राइट? सेकंड, Yes. इफ किसी को वेट लॉस करना है तो वो फैट लॉस करते हैं, नॉट मसल लॉस, राइट? Yes. परफेक्ट. So what you're saying is right, but people misunderstand these things. हाँ करेक्ट, बिकॉज What- इवन मुझे इनिशियली क्लियर नहीं होता था, बिकॉज आई यूज टू गो जिमिंग अर्लियर, तो मुझे भी ये कंसेप्शंस जो है, जो डिफरेंट कंसेप्ट है वो मुझे क्लियर नहीं होते थे. राइट नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. तो लेट्स अज्यूम अगर मुझे वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, सो मुझे स्टार्ट में कौन से टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए? First, See, let's go for weight gain, because honestly, for me, I feel so, you can consider unlucky, I can consider, because there are a lot of people, those who consider creating content on weight loss rather than weight gain also. But there are a lot of people जिनको weight gain करना है, but there is no such content on gaining weight. So how do we go about that? पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, then weight loss. okay. So considering weight gain, we'll talk about how do you get started with Yeah, anything. from basic Maybe till it's advanced. yes, maybe it's a fat loss or maybe it's a muscle gain. Yeah. Okay. So basically, what you have to do is first you have to concentrate on balancing your body. Okay. Balance. ठीक है. Balancing the body means while doing any workout, you have to maintain some sort of balance in your body. Okay. If you're doing squats with a bar on your shoulder, okay, then you have to also look for balance. Okay, हाँ. because you are going with the weight down, okay, and you are pushing your body a little behind. So there Yeah. might be, there comes the thing called balance. You could go because of the weight backside. Okay, so balancing your body is important. First, you have to learn with balancing. Okay. Yeah. Second is form of exercise. Every exercise have a certain form where it hits the targeted muscle, and with the correct form, you do not get injuries. हाँ करेक्ट, दैट्स ट्रू. तो फॉर्म करेक्ट होना बहुत जरूरी है. मतलब मैंने जिम्स में देखा है लोग ईगो ट्रेनिंग करते हैं, मींस दे आर hitting bicep but their whole body is moving while hitting the biceps. True. And and the tension that has to come on biceps, the tension they do not feel. Okay, why? Because they go for ego training. How much more weight I could lift? Okay, heavy weight or heavy lifting heavy, definition of lifting heavy is different from person to person. Okay, maybe 10 kg is heavy for you, but since I am working out from so many years, it might be a warm up set for me. True. Yeah, so that is the thing. So first is balance, second is form. If your form is correct, okay, eventually you will start gaining the strength. Okay. Okay, because without strength you cannot lift heavy. Correct. Okay, so with the correct form, you first focus on the form. While focusing on the form, you gradually increase the weight. Gradually. Huh. Okay. Yeah, gradually means suppose today you are working out, you are lifting 5 kg with the correct form. Okay, maybe after 6 months you would lift 10 kgs, but with the correct form. But you could able to lift the 10 kgs with the correct form because you have built that strength in the span of 6 months. Correct. Okay, so this is how you should approach while exercising. Okay, now talking about one more exercise, it's called deadlift. Okay, Favorite. so initially, when any person is initially going for gymming, he should not do deadlift exercise. Okay, because your back do not have that much strength to hold the weight of that exercise or the weight you are lifting. Okay, so you have to build the strength of your back. Okay, and how it happens? It happens with the regular workout eventually. With the regular workout that it happens, it back gets the strength is get built in the back. Okay, so initially do not go for deadlift. Okay. Then one more thing is warm up and stretching. Okay, so before workout you have to do warm up and stretching of your body. Okay, so you at least 10 minutes to it. 10 minutes. Warm up and stretching does not mean you enter the gym and you go on a treadmill. Okay, people do that. People say that what they do for warming up the body, they go on a treadmill immediately and then they go for workout.
That is not the right way. Okay, it is different case in the fasted cardio. Okay, fasted cardio means when a person is on fast and he goes for cardio, means they, it differs with the techniques and all. Okay, so but for basically you have to do warm up and stretching. Okay, otherwise what could happen is you would get stretch marks on your body if you do not do proper warm up and stretching. Means I have So, been through that. हाँ I have हाँ been through that. I have stretch marks on my hands. I have stretch marks over here. Okay, so that stretch marks means even if you do good warm up and stretching, that stretch marks may come, may appear, but not in that much amount. Okay, so warm up and stretching is important. It is also important to help you prevent injuries. Warm up and stretching, हाँ because you are warming up your body, you are making it ready for the intense exercise. correct. If you go immediately and you are lifting heavy, it would lead to injury because your body is not ready for it. No? True. Okay, so warm-up and stretching is very important. Yeah, so that's it. Means ठीक है. what a beginner So should do. if I want to go for weight training and मुझे weight gain करना है, first I need to focus on balancing. Balance. Second is form. Third comes intensity, कि अगर मैं आज 10 kgs से lift कर रहा हूँ, then I have to go for 15, 20 gradually, and according to But time, I'll gain the strength also. I'll also yeah, gain the form also. Then yeah, only go for but it. Otherwise, बहुत सारे लोग करते हैं, पूरी body lift कर लेते हैं, except the biceps and so on. you have to make sure if you are increasing the weight, your form should not get compromised. Perfect. Perfect. Then That's that true. weight is too heavy for you. हाँ. And initially deadlift start नहीं करना है. By the way, what's your PR for deadlift? 80 kgs, 5 repetitions. Okay, that's the highest. Highest. With Means I proper do form. not perform deadlift a lot many times. I do not अच्छा. perform deadlift a lot of times. Means not on a regular basis. Means हाँ हाँ. people do deadlift on the day they are hitting their back. Back, correct. But I do not do it every time. I do not do Perfect. it every Because time. even I used to do every week back वाला जिस दिन होता था, and I reached the stage of 110 with 2 repetitions when I was having weight of 60 kgs, and that was my thing. But honestly, वो form थोड़ा I was building that form, and when I used to reduce the weight and then like somewhere till 80, maybe till 90 also, जो मेरा form रहता था, proper posture and so on, proper like up and down and all of those things, वो proper होता था. But next to that, वो थोड़ा form बिगड़ जाता था, and I thought like with the help of timing and experience, I'll gain this one. I'll gain the proper form, but वो कभी हुआ नहीं. Maybe in this version of me, I'll gain that. So talking Yeah. about the things which are really important for weight gain, right? Weight पहले gain. हमने वेट गेन का एक्सरसाइजेस वगैरह हमने डिस्कस किए. पहले हम लोग इसमें फूड एंड फ्रूट्स को इन्वॉल्व कर लें, या फिर पहले हम वेट, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फूड विच आर इम्पॉर्टेंट, food ingredients which are important, and fruits also which are important for weight gaining journey. Okay. So while gaining weight, okay, it is see the protein remains constant whether it's weight loss or it's weight gain. Okay, Okay. the protein remains constant because protein is important for your body, and protein do not get converted into the fat as carbohydrate does. बिल्कुल. Okay, if you want to gain the weight, you have to keep the portion of carbohydrate more in your diet. हाँ. Obviously protein also. Okay, good amount of protein. Okay, and for that, with that thing, okay, means it's like it's hard in weight gain. The challenge is eating, हाँ. and in fat loss the challenge is working out. हाँ, correct. Okay, so you have to have that much amount of calorie to gain weight. Okay, and eating that much amount of calorie is not easy in the initial stages. Maybe eventually you could get used to it and you could have that much of calories in 4 or 5 meals or whatever you have distributed in. So while taking that, fruits, it's like fruits, you could have fruits what role fruits plays, they have glucose in it, they have vitamins and minerals in it. So there are no macronutrients in it. If you talk about banana, there are macronutrients, there are some carbs you get from bananas. So while weight training, people prefer eating bananas. Correct. Okay, and yeah, that's it. Means there is not much. You have to just keep your carbohydrate high for weight gain, and protein is obviously it's needed. बिल्कुल.
सो यू मेंशन्ड कि यार वेट गेन करना है या वेट लॉस, दैट डजंट मैटर, प्रोटीन कंटेंट सेम होना चाहिए. अगर वेट गेन करना है तो कार्ब ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज दैट लीड्स टू फैट, एंड वंस यू आर वर्किंग आउट दैट रिमेन्स एज अ गुड फैट, एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर मसल्स एंड सो ऑन, तो जिसकी वजह से वेट गेन में हेल्प होती है. Yeah, हाँ, working out does not allow that carbohydrates to turn it into a lot बैड of वन. fat in you because करेक्ट, it gets burned by working out. करेक्ट, करेक्ट. तो यू ऑल्सो मेंशन्ड कि अगर वेट गेन करना है तो उसमें खाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, एंड अगर वेट लॉस करना है तो उसमें वर्कआउट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो Hmm. ये था वेट गेन के बारे में. अब अगर वेट लॉस के बारे में डिस्कस करें, जहां पे हमें Hmm. वर्कआउट ज्यादा करना है एज कम्पेयर टू ईटिंग थिंग्स एंड सो ऑन, तो उसका Hmm. वर्कआउट क्या डिफर करता है? लाइक व्हाट आर द Uh, थिंग्स एज यू मेंशन्ड it अबाउट बैलेंस, फॉर्म एंड ऑल ऑफ दोस इन वेट Hmm. गेन, तो वेट लॉस में क्या होता है? Basics are same, balance, form, ठीक है. strength. हाँ. Basics are same. Okay, this is same for everything. Then in weight loss, what differs is the intensity of workout. It differs intensity of workout. Okay, ठीक means है. for gaining weight, you could do the amount of cardio you do, and for as compared to fat loss, okay, is less. Means it's your choice. You could do it also. You could not do it also. But for good pumping or good pumping of your heart or blood, means for endurance, for building endurance, you could do some sort of cardio. If you want to gain weight, with gaining weight, you could do some sort of cardio, ठीक है. not so much that your body enters into a fat loss stage. अच्छा. Okay, means you could do it for 5 minutes, 10 minutes, that's okay. But for losing the weight, for doing fat loss, cardio is to be done for a longer period of time, either longer period of time or with a great intensity. Okay, अच्छा. हम्म. intensity. It's like there is a form of hyper intense interval training. Okay, हम्म. hyper intense interval training. The intensity is very high of that training, where you have to do jumping jacks, where you have to do bungee jumpings. Sorry, bungee jumpings. I say burpees. Okay, burpees where you have to do all the activities that are making your whole body, your legs move in a very speedy manner, or where you get so much of what you say endurance building you. Okay, endurance exercise. It's kind of endurance exercise. So the हम्म. more your body gets on a high intense interval training, okay, the chances of burning fat is more. बिल्कुल. Okay, that is important because weight training will build muscles, but along with that, cardio and hyper intense interval training will lose fat. करेक्ट, Means you could build muscles and lose fat at the same time. करेक्ट. At the same time, the people who do not include resistance training in their fat loss journey, okay, they lose muscles along with fat. अच्छा. They lose strength along with fat. हम्म. They lose water in their body along with fat because they are not in resistance training because they are not building muscles. सो आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए कि लाइक वी शुड अवॉइड दिस सिनेरियो जहां पे हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करना है. वी शुड अवॉइड दैट सिनेरियो, यानी कि इवन इफ वी आर डूइंग वेट गेन और वेट लॉस, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना ही चाहिए. अदरवाइज व्हाइल लूजिंग वेट we will also start losing muscles, we'll also start losing the water in our body and the energy which we have in our body. So these are the Yes. things. ठीक है. Yes, yes. Any other things with respect to weight loss while working out? It's like there is a thing where people stop taking salt in weight loss. अच्छा. ठीक है. Stop salt. But you don't have to eliminate salt completely from your diet because sodium is also important for your body. Okay. हाँ. The thing behind it is that salt holds water in the body. Okay, so people prefer eliminating the salt from the diet, but but in the same time, at the same time, sodium is important for your body. Okay, so Correct. you do not eat too much of sodium, but you have sodium in your diet. Okay, ये and you चीज़ है. work out. Yeah, you work out and you burn your calories over there. And many people, there is a misconception that if you have to do fat loss, we have to eat less. हाँ, Okay, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है. it's not about eating less, it's about eating what in what quantity. ठीक है. Okay,
Yeah, it's like you don't have to eliminate meals. Means you have to take at least 5 meals, three major meals, two small meals. Okay, just what you have to do, you have to decrease the amount of carbohydrates from that meal, from that diet. Correct. You don't have to keep the protein intake high, keep the fats intake, no problem. But you have to decrease the carbohydrate content, and that is the that is kind of and where from see if your carbohydrate is reduced or it's eliminated. Okay, generally it's not recommended to eliminate, because then where from where you will get the glucose. True. Okay, carbohydrates give some sort of glucose to your body. Correct. Okay, so keto diet is a completely different thing. Okay, so you have to reduce the amount of carbohydrates, and you could take some we called it fibrous carbs from the vegetables. अच्छा. You could replace it, because fibrous carbs do not get converted into fat. Okay, so this is the thing you have to consider in fat loss. ठीक है, बहुत important है. एंड विथ दिस सेम थिंग, एज यू मेंशनड कि यार प्रोटीन का इंटेक सेम होना चाहिए, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मिसकंसेप्शंस हैं. इवन मुझे ये पहले बहुत मिसकंसेप्शन था दैट इफ वी आर अ वेजिटेरियन, बिकॉज आई एम अ प्योर वेज पर्सन. इनिशियल डेज में मैंने एक दो बार एग्स ट्राई किए हैं, बट आई डेंट लाइक द टेस्ट, तो मैंने ड्रॉप कर दिया. आई ओनली प्रेफर द वेज थिंग्स. तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि यार इफ आई एम अ वेजिटेरियन गाय, आई वोंट गेट प्रॉपर प्रोटीन्स. And for non-veg it's very easy, so that's why a lot of people switch from veg to non-veg rather than going for supplements under doctor's prescription and trainer's prescription. So what would you like to recommend to people? क्या supplements लेना सही है, उसमें क्या होता है, या फिर go for non-veg options and or else go for veg things? See, if you are vegetarian, there is absolutely no problem, because there are means what we say food items in veg which have a good source of protein in it. Okay, Yep. there are, but it's like they are it is called that they are not complete proteins. Means you have to find two food items, any two food items which complete the amino acid profile of protein. Any two food items अच्छा. that you have to find. I do not remember where I studied it currently, because a long back I studied it. That in vegetarian you have to find two items. Maybe it's for example it's a peanut butter. Peanut butter has maybe say some amino acids, and it's a rice. Rice has some amino acids, and when you combine them, it creates a complete amino acid profile. Perfect. Okay, it's just that you get less amount of protein in a very big quantity in vegetarian. That's why people go for non-veg, because they get more amount of protein in a less quantity. हाँ, correct. Okay. And then, same is with the whey protein thing. Whey protein, what it has 24 grams of protein in one scoop. Means it in less quantity, it has more protein. So that is the reason people say that vegetarian people could not do these all things. But that's not means until and unless you have to gain big muscles and all. So if you want to stay fit, that's okay. You can go for vegetarian diets, no problem. And you could add on supplements with that. Yeah, we'll talk about the supplement. So yeah, you go on. हाँ, सो इट्स लाइक अगर हमें दिस वन, अगर हमें नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी है एंड वी डोंट वांट टू गो फॉर एनी वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, लाइक ह्यूज थिंग्स, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल वेज ऑप्शंस भी रख सकते हैं. बट इन वेज Yes. वी हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स जो कि एक फुलफिलमेंट कंप्लीट कर सकें. एंड इट्स लाइक वेजिटेरियन में a lot of things need to combine together to form small amount of protein, but non-veg एंड जो एक्चुअल प्रोटीन पाउडर्स एंड सो ऑन होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो उनमें स्मॉलर क्वांटिटी में बड़ा प्रोटीन अमाउंट मिलता है, बड़ा प्रोटीन इनटेक होता है. सो दैट्स व्हाट यू वांट टू शेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार सप्लीमेंट्स वेदर इट्स गुड फॉर आवर बॉडी इन अ लॉन्गर रन. लेट्स अज्यूम, ठीक है, किसी को नॉर्मल बॉडी गेन करनी है एंड दे नीड टू गो फॉर नॉर्मल लाइफस्टाइल, बट उनको थोड़ा सा रखना है कि यार मेरी बॉडी दिखे एंड सो ऑन. तो क्या वो सप्लीमेंट लेना इज गुड फॉर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इट कैन बैकक्लैश इन टर्म्स ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और समथिंग लाइक दैट? See, प्रोज एंड कॉन्स स्ट्रेट अवे. या
Yeah, see, now I don't know why people do this. People will do all sorts of addictions, and they, Mm-hmm. even if they know that there are side effects of it, but still people ask that whether taking these supplements will give me any kind of side effects. I don't know why. Means when it comes to health, people ask that will we get a side effects. मतलब वहाँ पे सिगरेट पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, सब कर रहा है, उसमें पता है साइड इफेक्ट्स है, पर फिर करेक्ट। भी यहाँ पे पूछेगा कि हेल्थ की बात है, तो फिर पूछेगा कि कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या, मतलब हेल्थ इस केस में इंपॉर्टेंट है, उस केस में इंपॉर्टेंट नहीं है क्या. सो करेक्ट। थिंग विद द सप्लीमेंट आई टेल यू, सी द supplement name itself describes it. Okay. नॉट uh, मेन थिंग, इट्स द सप्लीमेंट्री थिंग। it's a supplementary thing. It's like कि आप 10th स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप पूरी आंसर शीट भरने के बाद ही उसको सप्लीमेंट ऐड करते हो. करेक्ट। सो हियर आंसर शीट इज डाइट. डाइट, आप जितनी मर्जी चाहे सप्लीमेंट्स लो, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ गुड डाइट ना, यू विल सी नो रिजल्ट्स. आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. फर्स्ट इज डाइट. मतलब इनिशियल स्टेजेस में, आफ्टर स्टार्टिंग वर्किंग आउट, इन माय वर्किंग आउट जर्नी, आफ्टर 4 years आई इंक्लूडेड सप्लीमेंट इन माय डाइट. अच्छा। After 4 years, but I did not compromised on diet. My diet was there. I just made an add-on to the supplement. ओके. तो सप्लीमेंट्स में मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट ऐड करने से तुरंत बॉडी बन जाएगी. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. इट्स लाइक कि शॉर्टकट अपनाने के लिए ये सोचते हैं लोग. मीन्स रिसेंटली आई गॉट मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर कि मैं ऐसा ऐसा जिमिंग कर रहा हूँ, और कुछ दिनों से कर रहा हूँ, आई वांट टू ऐड ऑन सप्लीमेंट इन इट एंड ऑल. आई सेड व्हाट इज योर डाइट. He said, I do not focus much on diet, but I want to take supplement. I said, there is no use of taking supplement if you are not following any certain diet. You will get no results. It would be a waste of money, waste of time. But still, he took a supplement and he just asked me whether it's the right thing. Is it natural or is it duplicate? Then I told him it's good. You can have it. You can take it. तो सप्लीमेंट से प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है. ओके. अनटिल एंड अनलेस यू आर ओवर डूइंग इट. ठीक है. कोई भी चीज, आप पानी भी हद से ज्यादा पी लो, आपको तकलीफ होगी. करेक्ट। आप दूध भी हद से ज्यादा पी लो, आपको तकलीफ होगी. एनीथिंग इन राइट प्रोपोर्शन इज गुड फॉर यू. ट्रू। एनीथिंग इन राइट प्रोपोर्शन. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन लिया, ये लिया और वो मतलब मील के जगह आप प्रोटीन ही खा रहे हो बस. सो दैट्स नॉट गुड. यू डोंट हैव टू रिप्लेस इट विद द मेन डाइट. यू हैव टू ऐड ऑन इट विद द मेन डाइट. ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट. What should be an ideal diet of a person who is going for a gymming thing? See, in case of weight gain, every meal should contain protein. How many grams? Every Like बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम्स एंड सो ऑन. What's the ideal you measurement? for the basic person, at least have protein of your weight multiplied by 1. That means Okay. if you have 6, you could have that much gram of protein. Okay. Okay. Ideally, if you want to increase the amount, you could increase it by 1.5 into 2, depending on your goal. Okay, protein. So that is recommended. But you should have some protein in every meal. In every meal. Okay. Then carbohydrate intake, but good carbs you should have. It's like from potatoes, from bananas, from rice. You could have wheat roti. Okay. Do not go for maida. Okay. You Mm-hmm. could have jowar roti. Okay. These are the good source of carbohydrates. Then keep included fat in it. Good fats. Good fats come from like almonds. Good fat you will get from peanut butter. Good fat you will get from olive oil, coconut oil. Those are expensive oils. People generally do not prefer those. But yeah, if you do not have olive oil or coconut oil in your house, you could use ghee, good cow ghee. Okay, so that are the good sources of fats, and those are important. Means I tell you, muscle building does not happen just with protein. It happens with protein and good fats. हाँ. Okay, so that is important. For weight loss person, you have to have a control on your carbohydrate intake. Rest protein and fats intake, you keep it normal. Mm-hmm. Yeah, so that's the difference. There is not much difference in That's true. basic. हाँ, that's really true and that's really helpful as well. और यहाँ पे हम लोग एक ट्वीक रखते हैं बिकॉज हमने पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था मेंटल हेल्थ पे, हमने वहां पे डिस्कस किया था दैट इवन आई मेंशन अबाउट दैट कोटेशन दैट सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट 80% साइकोलॉजी
and 20% skill set, like जो हम फिजिकल चीजें करते हैं. So let's take for example किसी का mental health में issues हैं, they are going through stress, depression, anxiety or any other problems as well. तो उस फेज में क्या हमें आइडियली वर्कआउट करना चाहिए टू गेट आउट ऑफ दैट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अभी मैं स्ट्रेस्ड हूँ, आई नीड टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, मुझे अपना सारा स्ट्रेस जिम पे निकालना है, लाइक वर्कआउट पे निकालना है एंड सो ऑन. क्या वो करना चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट टू दैट इज, क्या उससे इफेक्ट पड़ता है? बिकॉज यू मेंशन कि इंटेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो हमारा इंटेंशन है कि हमें वो सारा गुस्सा निकालना है, सारा स्ट्रेस निकाल देना है, तो क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर इट विल बैकलैश ऑन अस? इट वुड गिव यू अ सर्टन इफेक्ट दैट, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं कि जो ब्रेकअप होने के बाद दे गो फॉर वर्किंग आउट बिकॉज दे हैव टू टेक ऑल देयर stress and all their aggression in the gym. Okay, True. so that is not bad because they are releasing that stress and emotion into the gym. They are हाँ. releasing it. They are not keeping it with themselves. So in some form, it is good. In ठीक some है. form it is good, but they also have to be conscious about that. While doing working out, they should not be so aggressive that they lift much heavy, or they go with the wrong form, or they do something that will lead to injury. That care they have to take with it. ओके, सो राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि यार मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ता है, बट इट्स लाइक अगर हम लोग वो स्ट्रेस निकाल रहे हैं, इमोशंस निकाल रहे हैं, दैट्स गुड फॉर अस. बट आइडियली लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान डाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, सेडेंटरी Hmm. लाइफस्टाइल है, एंड दे आर इंक्लूडिंग लॉट ऑफ जंक फूड. बिकॉज ऑनेस्टली मैंने अभी कुछ मंथ्स पहले ये स्टेटमेंट सुना था दैट अगर हम लोग फूड्स लाइक प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजीज पे फोकस कर रहे हैं तो लोगों को ये फास्टिंग लगता है, लोगों को ये एक्चुअल डाइट लगता है, बिकॉज पीपल आर नाउ फोकसिंग ऑन जंक फूड सो मच कि उनको ये हेल्दी Yeah, लगता है, विच इज yeah. एक्चुअली नॉर्मल फूड एंड ऑल. बट लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान जंक फूड खा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उनका क्या होगा? लाइक व्हाट दैट जंक फूड विल इम्पैक्ट ऑन देयर दिस वन जिमिंग एंड हेल्थ थिंग. Okay. So first of all, junk food contains one amino acid. Okay, that ठीक is है. an unstable amino acid which is called as monosodium glutamate. अच्छा. Monosodium glutamate (MSG). Okay, means in all the processed foods, bakery items, then restaurant food, Chinese and all, 80% of MSG is present in it. अच्छा. 80%. हम्म. Okay, it is unstable amino acid which puts the oxidative stress on your liver. अच्छा. Liver. हम्म. And in most cases, body is not able to flush it out. अच्छा. Body is not able to flush it out. It leads to many many harmful effects. Like you could say that it creates hormonal imbalance हाँ in your हाँ. body. If you see that the people who eat junk, specifically women, okay, they हाँ हाँ. have a lot many hormonal changes in their body because their diet is not good. Okay, अच्छा. so yeah, so that junk food creates that thing in them. Then it kills the brain cells. अच्छा. Uh, that MSG element in the junk food kills the brain cells. More, it is not recommended because it contains bad fats. Okay, करेक्ट. bad, yeah, bad fats is because any junk food actually can means open you for many serious diseases. हाँ. Okay, एंड because ऑलमोस्ट उन सारी चीजों में मैदा होता है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड एज यू मेंशनड. yes. It contains maida and all those things, and it ultimately it increases the obesity of a person. हाँ. Yeah, it makes person obese, and when the obesity, a lot of diseases come. ट्रू. So junk food is really a very kind of demon for everyone because the way it is prepared, the things used in it, and all those things. दैट्स ट्रू. सो यू मीन कि जंक फूड से लाइक जो कुछ भी एसिड्स हमारी बॉडी में आते हैं, एंटर होते हैं उसके थ्रू, इट कैन मेक अस ओबेस, इट कैन ऑल्सो मेक अस प्रोन टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस. बहुत सारे डिजीजेस Yeah. इजी हो जाएंगे, विच मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इम्यूनिटी वीक हो जाएगी हमारी, ब्रेन सेल्स को Yes. डैमेज होगा एंड मेनी अदर थिंग्स. सो इन सिंपल वर्ड्स जंक फूड इज जस्ट किलिंग अस. थोड़ा Yeah. हमें टेस्ट
के लिए फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम वो स्पाइक हो जाता है कि यार मैंने काफी टेस्टी खाना खाया, बट अल्टीमेटली Again, लॉन्ग टर्म dopamine. में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए. So Yes, yes, yes. that's a serious problem which we need to focus on. Hmm. And there is one more Miss, question which a lot of people have. Yeah, go for it. once in a while it's okay. If you हाँ, are having junk food once in a while, it's okay. But doing what it on a regular, or I would say every 2 3 days, that's not recommended. true. So the question which I was about to ask, बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन होता है कि यार लेट्स अज्यूम मेरे पेरेंट्स जो हैं उनके लाइक वो ओबेस हैं या उनका थोड़ा वेट ज्यादा है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, तो उनके जीन्स मुझ में है. सो बेस्ड ऑन दैट मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगा. दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शन विच पीपल हु आर हैविंग मच वेट दे हैव कि Hmm. यार मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा वेट कम नहीं हो रहा है वो Hmm. जीन्स के थ्रू. सेकेंड क्वेश्चन Hmm. कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई जीन्स थ्रू माई पेरेंट्स, जिसकी वजह से इवन दो आई एम फोकसिंग ऑन माई डाइट, इवन दो आई एम फोकसिंग ऑन फॉर्म, स्ट्रेंथ, बैलेंस, एवरीथिंग, इवन दो आई एम फोकसिंग ऑन प्रॉपर सप्लीमेंट्स एंड सो ऑन, बट मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है. सो इज दैट अ ट्रुथ और इज इट जस्ट अ मिथ? It's a myth because I my weight when I started it was 40 kg. 40 ओके. kg. Yeah, ओके. and if I would have not started at that time, okay, maybe at after 10 years also my weight would not have increased much. It would be below 45 only if I would have not taken anything. Okay, now one thing comes into play here is insulin. हाँ, Insulin is a hormone in our body. Okay, करेक्ट. now I will say people say that we are obese because our parents were obese. It is hereditary, but हम्म. you could change it with good exercise, good diet. Okay, body will lose the fat with good exercise, good diet, good training, good sleep, everything. It is possible. Okay, and again the challenging thing is workout. You have to show up every single time for the workout. You have to have faith in the process. करेक्ट. Okay, people who want to gain weight. Okay, now what, there are two terms called insulin sensitivity, and one is insulin, people who are insulin sensitive and people who are not insulin sensitive. Now the people like you and me, we are not sensitive to insulin. Okay, ओके. insulin is a हाउ? hormone. Insulin, sorry, insulin. We are not sensitive to insulin. Insulin is a hormone which carries glucose and nutrients to the body, ठीक है. into the blood, to the हाँ, cells हाँ. into the blood. Okay, now our insulin sensitivity is less. That's why that much amount of glucose and nutrients are not carried to our body. अच्छा. Okay, now the people who gain more fat but they do not eat too much. You could see that people who eat very less, but still they are obese or they हाँ, have a हाँ, lot of हाँ. weight करेक्ट, करेक्ट, because करेक्ट. they are insulin sensitive. Because they are अच्छा. insulin sensitive. Okay, their body carries that insulin carries almost majority of portion of the nutrients and glucose to their blood अच्छा. from the amount of food they eat. Okay, now while working out they could burn the fat. Okay, now there is some effect on insulin which helps them burning the fat. Okay, हम्म. and for us, people like us who are insulin non-sensitive, we have to work out to increase our insulin sensitivity so परफेक्ट. that our body absorbs or it carries more nutrients and glucose to our cells in the blood. दैट्स So ट्रू. that is the difference of insulin sensitivity. दैट्स ट्रू. सो इट्स लाइक जो लोग इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है, उनको थोड़ा Hmm. डिफिकल्टी होता है टुवर्ड्स वेट गेनिंग जर्नी. लाइक इवन दो वो खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उनके लिए. सो इन दैट स्टेज वी हैव टू बी इंसुलिन सेंसिटिव. सेकेंड Hmm. कम्स बहुत सारे लोग कम खाते हैं बट उनका वेट बढ़ जाता है बिकॉज दे आर इंसुलिन सेंसिटिव. सो इवन दे नीड टू Hmm. वर्क ऑन दैट. सो दैट्स अ ग्रेट Yeah. पॉइंट. The last, or maybe I would say last, second, or whatsoever question, is that the importance of sleep and rest days, because I have seen a lot of people जो हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हैं but every day they are working on two muscles. Let's assume Ah. back bicep, chest Hmm. tricep, and then shoulders and legs. So even I Yeah. have seen a lot of people doing this same kind of workout. पहले 3 दिन अगेन 3 दिन वो एक ही हफ्ते में डबल रिपीट करते हैं. So Hmm. how do we go about that? Initially, though, I feel one muscle in a day.
तो कितना टाइम एज अ स्लीप होना चाहिए, रेस्ट टाइम, और कितने दिन हमें हफ्ते में वर्कआउट करना चाहिए एंड कितने दिन हमें रेस्ट डेज होने चाहिए? You should have at least 1 day for rest. ओके, 1 day. उसको There संडे are मानना people. चाहिए? बिकॉज संडे को तो ऑलरेडी इट्स लाइक एवरी डे टेक्स एन ऑफ, तो संडे को ही रेस्ट डे माने या फिर एक्सेप्ट संडे? संडे को क्यों माने? क्योंकि अगर आप किसी और दिन रेस्ट डे मानेंगे तो संडे को तो जिम खुले नहीं रहते, करेक्ट। because they take off at Sunday, so you better take off on Sunday only. ठीक है? ओके। You could take off for 1 day, you could take off for 2 days, Saturday, Sunday also, doesn't matter. Okay, your body needs rest. In short, body needs rest से ज्यादा आपके मसल को रेस्ट चाहिए. ठीक है? करेक्ट। हाँ। बहुत से लोग होते हैं जिम में, रोज आएंगे, रोज पुशअप्स मारेंगे, रोज एवरी डे दे विल डू पुशअप्स. ठीक है? करेक्ट। बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट गिविंग द मसल द टाइम फॉर रिकवरी. अच्छा। ठीक है? अगर हमने मंडे को मान लो चेस्ट और बाइसेप का वर्कआउट किया है, देन अगेन विल डू इट आफ्टर 2-3 days बिकॉज वी आर गिविंग दैट मसल दिस स्पैन ऑफ रिकवरी. ठीक है? हाँ। रोज रोज अगर आप एक ही मसल हिट करोगे तो वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो रहा ट्रू। है. एंड द रिकवरी हैपेंस इन द स्टेज ऑफ स्लीप. ओके? हाँ। आप जिम में मसल को तोड़ते हो, ठीक है? आप किचन में मसल को फीड करते हो, यू गिव न्यूट्रिशन, डाइट हाँ। गिव्स न्यूट्रिशन टू द मसल, बट एक्चुअली मसल ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ डीप स्लीप. करेक्ट। मसल ग्रोथ कब होती है? फैट लॉस में भी सेम. फैट लॉस आप जब नींद में होते हो तब आपका फैट लॉस होता है, आप वर्कआउट करते हो तब आपका फैट लॉस नहीं होता है. ठीक है? सो healing, all types of healing happens in the form of deep sleep. एंड हाउ All मेनी types of आवर्स healing. इट रिक्वायर्स? At least 6 to 8 hours. ओके, तो See, व्हिच the मींस हाँ. span, the span from 11 p.m. at night to 2 o'clock in the midnight. That span is the span of body where body regenerates or recovers or reconstructs itself. हम्म। That is the recovery stage of the body at ठीक है। night. Okay. हाँ हाँ। सो बॉडी रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि रात हो गई है, बॉडी को पता है ये मेरे सोने का टाइम है, ये मेरी रिकवरी का टाइम है. ठीक हाँ है? हाँ। आप दिन भर कितना भी सो, बॉडी को ये नहीं पता कि रात हो गई है. बॉडी हैज अ क्लॉक ऑफ इटसेल्फ. करेक्ट। आवर बॉडी हैज अ क्लॉक ऑफ इटसेल्फ, सो इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉक. मतलब ऐसा नहीं कि आप रात को सोए नहीं, आपकी रिकवरी हुई नहीं, तो आप दिन भर सोओगे और आपकी रिकवरी हो जाएगी. नॉट नेसेसरी, क्योंकि सर्काडियन रिदम लाइक सन साइकिल के साथ होता है। rhythm. Yes, 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 yes. So that is what. And sleep का तो भाई बहुत डीप इम्पोर्टेंस है. और स्लीप मतलब ऐसा कहते हैं कि वक्त के साथ काफी चीजें ठीक हो जाती है. हाँ हाँ। मीन्स टाइम हील्स, बट एवरीथिंग। स्लीप, हाँ, बट एक्चुअली स्लीप इज कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन हीलिंग. स्लीप, ट्रू। फिर वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, ट्रू। स्लीप हिल्स. ठीक है? तो स्लीप से होता क्या है कि आप आपके चेहरे पे जो ग्लो है वगैरह वगैरह, वो भी स्लीप से ही आता है. मतलब इफ यू हैव अ गुड स्लीप, वरना फिर डार्क सर्कल्स आ जाएंगे नीचे इफ यू डू नॉट हैव अ गुड डीप स्लीप. ठीक है? करेक्ट। उसके बाद पूरा फैट बर्न, जैसे मैंने बोला, डीप स्लीप में होता है. उसके बाद आपके हेयर्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं डीप स्लीप में. करेक्ट। इट मतलब इट अब पूरी रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो फिर वो पूरे बॉडी की हो रही है ना. हाँ। ओके. तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है. गोइंग टू डीप स्लीप, इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी. आफ्टर दैट एनी प्रॉब्लम, एनी हेल्थ प्रॉब्लम और हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, वो डीप स्लीप में ही क्योर होती है. ट्रू। ठीक है? हार्मोनल बैलेंस आपका डीप स्लीप में होता है. मतलब डीप स्लीप इज द मेडिसिन फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीजेस. डीप स्लीप. डीप स्लीप। ठीक है? करेक्ट। स्लीप का इतना इंपॉर्टेंस है. एंड डीप स्लीप डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी. करेक्ट। इफ यू मतलब हर किसी ने ये नोटिस किया होगा, जब हम सुबह उठते हैं हमारी सांस की बहुत बदबू आती है. ठीक है? हमारे आंखों में गंदगी होती है. ठीक है? करेक्ट। और फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे इज वेरी वार्म करेक्ट। कंपेयर टू द वर्ल्ड डेज. तो वो क्या है? वो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो बॉडी ने परफॉर्म की जब आप सो रहे थे. ट्रू। तो स्लीप, डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस इन स्लीप. और जब आप अच्छे से नींद नहीं लेते, तो यू वेक अप विद टॉक्सिफाइड ब्रेन. ठीक है? यू वेक अप विद टॉक्सिफाइड ब्रेन इफ यू डू नॉट टेक गुड स्लीप. आपका ब्रेन भी डिटॉक्सिफाइड होता है. ठीक है? करेक्ट। डीप स्लीप में. ठीक है? सो दैट्स व्हाई स्लीप इज मोर दैट मच इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ बिफोर गोइंग टू स्लीप,
सोने सोने को जाने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्लीप को हैम्पर करती है, लाइक जैसे जैसे लाइट, ओके, लाइट इज वन थिंग, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप लेट इवनिंग में you go for coffee or any kind of caffeine or tea, okay, that अच्छा hampers your process of sleep at night, that hampers your process. उसके बाद होता है जैसे like you said light maybe it's a room light or it's a light of a mobile, okay, करेक्ट तो हमारी बॉडी को डीप स्लीप में जाने के लिए एक हार्मोन या फिर हाँ एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है मेलाटोनिन। करेक्ट मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप स्लीप। और मेलाटोनिन इट इज रिकमेंडेड दैट कि आप सारे लाइट्स ऑफ कर दो, सारे डिवाइसेस ऑफ कर दो बिफोर 45 मिनट्स गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो उसके पीछे वजह क्या है कि वो मेलाटोनिन हार्मोन जो रिलीज होता है बॉडी में, उसको वो चीज हैम्पर करती है, दैट लाइट हैम्पर्स दैट रिलीज ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन व्हिच डू नॉट लेट यू गो इनटू द डीप स्लीप, ट्रू ठीक है। आप देखो, ह्यूमन इज द ओनली एनिमल व्हिच कॉम्प्रोमाइजेस ऑन स्लीप, नो अदर एनिमल कॉम्प्रोमाइजेस ऑन ट्रू स्लीप, no other animal. दैट्स ट्रू Birds will return to their nest as soon as the sun sets. Birds will wake up early in the morning at 4 a.m. करेक्ट They follow the द correct सनराइज cycle. Yeah. So एंड वी that फील is, कि कम आवर्स सोने से वी फील कूल दैट वी आर स्लीपिंग हाँ, लेस एंड वी आर हसलिंग हाँ. So that is how important sleep is. दैट्स All ट्रू the magic happens in deep sleep. ट्रू दैट्स ट्रू एंड इवन आई थिंक इन द फेज 4 ऑफ आवर स्लीप जो Hmm. आपने माइंड का बताया दैट इवन आवर माइंड गेट्स डिटॉक्सिफाइड एंड सो ऑन सो आई थिंक Yes. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इवन आई थिंक मैंने 2 दिन पहले ही एक पॉडकास्ट में सुना था दैट वेन एवर वी Hmm. आर स्लीपिंग टॉक्सिन्स वगैरह तो रिलीज होते हैं एंड इवन देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनको लगता है कि यार जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ दे आर हीलिंग मी बट एक्चुअली मेडिसिन में वो नींद की थोड़ा होता है जिसकी वजह से हमें ज्यादा नींद आती है वाइल वी आर Hmm. टेकिंग एनी मेडिसिन और वो नींद की वजह से वी आर हीलिंग आवर सेल्फ सो इवन आई थिंक Yeah. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड इवन हमारे ही एक पॉडकास्ट में हमने हाई परफॉर्मेंस पे कवर अप किया था सो आर गेस्ट मेंशन्ड कि 6 आवर्स और 8 आवर्स नॉट 7 आवर्स बिकॉज जैसे यू मेंशन अबाउट मेलेटोनिन ऑल्सो देर आर डिफरेंट हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी Hmm. में कंटिन्यूअस साइकिल में फॉर्म होते हैं वाइल वी आर Yeah. स्लीपिंग सो इन दैट फेज या तो 6 घंटे में या तो 8 घंटे में वो जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर वेरी लेस पावरफुल अगर हम उस Hmm. टाइम पे उठ रहे हैं प्रॉपर 6 आवर्स और Hmm. प्रॉपर 8 आवर्स और प्रॉपर 4 आवर्स ऑल्सो तो हम एनर्जी के साथ वेकअप करेंगे या फिर अगर हम Yeah. लोग उसके ही बदले 5 और 7 और इवन 9 आवर्स की स्लीप ले लें देन वी विल फील Hmm. लेथार्जिक बिकॉज वो हार्मोन Yes. उस टाइम पे कंप्लीट वो होता है एक्टिवेट होता है एंड देन उस टाइम पे उठने से वी फील लेजी फॉर द होल डे सो दैट्स द थिंग इसी के साथ आर देयर एनी अदर misconceptions or like myths which a lot of people have Yeah, there are myths. Means one of the myth is that women, if they do resistance training exercise, they will gain mm-hmm. muscles. Okay, that Acha. is the myth. But it's like that myth is not true because there is estrogen hormone called estrogen in Yep. female. Yep. Okay, and in male it is testosterone. Okay, Correct. so the amount of testosterone is greater in the male. That's why they are able to build that much intense muscles. Okay, Mm-hmm. but woman, it's not. It's like naturally gaining muscles is very difficult, even for men. Even Acha. for men, it's very difficult process of gaining muscles naturally. Okay, तो वुमेन जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, तो वो कैसे तुरंत मसल्स गेन कर लेगी? That's not possible. Correct. Okay, so that is a misconception that women will gain muscles. Second is supplements hamper kidneys. Okay, हाँ सुना है so मैंने बहुत बार सुना है हाँ, तो इट्स लाइक कि क्या आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। दूसरी चीज, जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी चीज को ओवर कर दो तो वो प्रेशर लाएगा सारे ऑर्गन्स पे, ठीक है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द सप्लीमेंट। ओके, मैं पिछले 6 साल से कंटिन्यूअस सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। आई टेक वे अच्छा प्रोटीन फॉर लास्ट 6 years. I have no problem with it. So एंड many of इवन आई डू bodybuilders. सजेस्ट कि यार इफ यू वांट टू गो फॉर एनीथिंग गो फॉर ट्रेनर्स प्लस डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन जैसे वो बोले Yeah, गो फॉर इट बेस्ड ऑन योर yeah. बॉडी Yes. The second myth is for men, it is specially
that if now there is a concept called wearing of supporter in the gym. हाँ Supporter. हाँ Okay. जी So now that supporter was not it was included in the fitness industry, fitness, specifically अच्छा gymming industry. Okay, it was not in it. Supporter is used by the people who are runners or cyclists. Okay, there was a reason behind it is that they should not get distracted. अच्छा Okay, okay, because they would get distracted because उनका जो sport है वो भागने का है या फिर साइकिलिंग का है तो उसमें वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो सपोर्टर पहनते हैं क्योंकि उनके टेस्टिकल्स टैग हो जाते हैं फिर वो हाँ हिलते नहीं है। ओके, सो हाँ दैट इज द रीजन दे शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे वेयर सपोर्टर। बट जिमिंग में सपोर्टर पहनना चाहिए ये गलत है, ठीक है, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। बिकॉज देखो, every organ in our body is inside our body except testicles. It is करेक्ट out of our body. Okay, ट्रू there is a reason behind it. Because the temperature of our body and the temperature of our testicles are different. Okay, करेक्ट our, the temperature of our testicles is less than the temperature of our body. ट्रू Okay, एंड दे so नीड टू बी कूलर yeah, they need to be cooler for the good fertilization of the sperms. यस Okay, the good growth and the complete growth of the sperms. So when you wear the supporter, the testicles stick to the body. करेक्ट ओके, और उसमें आप वर्कआउट भी कर रहे हो जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ और रहा है हीट हो रहा है यस और बढ़ रहा है, सो इट वुड हैम्पर द फर्टिलाइजेशन ऑफ योर स्पर्म्स एंड it may create infections also. So that is why it is not recommended to wear the supporter in the gym. ठीक है, मतलब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सपोर्टर नहीं पहनोगे और बिना सपोर्टर पहन के आप लेग्स का वर्कआउट करोगे तो फिर आपके टेस्टिकल्स का साइज बदल जाएगा वगैरह वगैरह, दीज ऑल आर मिसकंसेप्शंस। तो लोग बहुत से लोग बोलते हैं अगर हम सपोर्टर नहीं पहनेंगे तो हार्निया हो जाएगा, बट हार्निया हैज नथिंग टू डू विद सपोर्टर, बिकॉज इफ योर एब्डोमिनल वॉल इज वीक आपको हार्निया हो जाएगा। डजंट मैटर आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, इफ योर एब्डोमिनल वॉल इज वीक हार्निया आपको हो जाएगा, ठीक है, अम्बिलिकल हार्निया। उसके बाद का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं फैट्स ज्यादा खाऊंगा तो मेरे फैट्स बढ़ेंगे। अच्छा सो अगेन, फैट्स से फैट्स नहीं बढ़ते, कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फैट्स। और आप फैट कितना ही खाते हो, आप जितनी चपाती खाते हो उतना तो फैट आप खाते नहीं हो, ट्रू ठीक है। सो दैट इज अ मिसकंसेप्शन, फैट डू नॉट इंक्रीज द फैट। और एक और ऐसा है कि जो चीज आप होल्ड करके सॉरी जो चीज आप बंद कर दोगे बॉडी में डालना, हाँ हाँ ठीक है, बॉडी वो चीज होल्ड करेगी। इट्स लाइक कि अगर आप फैट्स नहीं खा रहे हो और एंड यू वांट टू डू फैट लॉस, ठीक है, और आप फैट्स ही नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी आपके अंदर जो बॉडी के अंदर फैट्स है वो होल्ड करके रखेगी, वो अच्छा उसको बर्न नहीं करेगी, बिकॉज बॉडी नीड्स फैट्स फॉर सर्वाइवल। अब उसे बाहर से नहीं मिल रहा है तो उसके पास जो है वो उसको होल्ड करके रखेगी, रिस्टोर ठीक है, करेगी हाँ because our the nutrition to our all the organs, fat is the nutrition to our all the organs, और ऑल ऑर्गन्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फैट्स। आप देखो हर ऑर्गन पे एक चिपचिपी लेयर होती है, वो लेयर फैट की है। अच्छा ओके, सो दिस इज दैट ईटिंग फैट्स विल गेट यू फैट, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि फैट लॉस के लिए दिन में 2 बार ही खाना चाहिए, एक बार शाम को एक बार रात को, मतलब बहुत से मिसकंसेप्शन ये लोग फॉलो करते हैं। बट इससे होता क्या है कि आपका जो इंसुलिन, हमने इंसुलिन की बात की, ठीक है, करेक्ट तो आपका हाँ इंसुलिन 2 बार स्पाइक होगा दिन में, बिल्कुल एक तो पहले मील में और एक करेक्ट शाम के मील में, ठीक है। करेक्ट बट आपकी इंसुलिन लेवल ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी इंसुलिन लेवल ऐसी होनी चाहिए, स्टेबल, अच्छा ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यू आर गेटिंग अ स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और एनर्जी टू योर बॉडी, ठीक है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देना है। इट मे लीड टू डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है ओके, उसके बाद हमने ट्रेडमिल की बात की, ऐसा बोलते हैं कि वार्म अप के लिए आओ और ट्रेडमिल पे चलो, बट दैट हाँ इज नॉट द राइट थिंग टू डू। उसके बाद हाँ, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं हेवी लिफ्ट करूंगा तो फिर मेरे मसल्स बढ़ेंगे, बट कितना हेवी ये लोगों को समझता नहीं है, ठीक है। करेक्ट सो जस्ट वी एज वी डिस्कस, हेवी वेट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी करेक्ट का देख किसी का देख के आप हेवी वेट उठाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फॉर्म, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, ट्रू ठीक है। आपको एक बंदा लग रहा है वो डंबल उठाकर देने में, बार उठाकर देने में, सो दैट इज टू हेवी फॉर यू, बिकॉज आप खुद से उठा नहीं पा रहे हो उसे, दैट इज टू हेवी फॉर यू, यू नीड सपोर्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम द फर्स्ट रिपीटेशन, दैट इज टू हेवी फॉर यू, डू नॉट डू दैट। ट्रू एटलीस्ट आप खुद अपने वेट्स उठा पाओ,
this you could do. उसके बाद yeah, these are some of the misconceptions. These are some of the myths. All right. So, any last advice for the audience, those who are watching this podcast? मैंने तो काफी कुछ सीखा है because I want to gain weight and definitely ये जो भी podcast में हमने discuss किया है, I'm going to follow every single step from step one, from my day one. और any last advice for our audience जिनको gymming start करनी है, और इवन फॉर द ऑडियंस जो जिम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, दे जस्ट वांट टू गो फॉर बेसिक स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, रनिंग और एनीथिंग, एनी एडवाइस फॉर बोथ ऑफ दोस ग्रुप, whether it is The men first or women, anything? the first advice is find a mentor who will guide you through all this. The second advice for the gym brats is shortcuts के लिए मत जाओ यार. शॉर्टकट्स के लिए मत जाओ. मतलब बॉडी बनानी है सर, 3 महीने में बॉडी बन जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता. ठीक है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी सालों लगाते हैं तब जाके उनकी ऐसी बॉडी बनती है. सो 3 महीने में बॉडी नहीं बनती. डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. इफ योर ट्रेनर इज सजेस्टिंग यू एनी काइंड ऑफ गियर्स और एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल गियर्स, डू नॉट टेक इट, बिकॉज आप आपकी बॉडी के साथ, तो यू आर हैम्परिंग योर बॉडी इन अ लॉट मोर वे. डू नॉट गो फॉर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड ऑल. ट्रेनर्स है ऐसे जो सजेस्ट करते हैं ये ले ले, ये हो जाएगा, ये ले ले, वो हो जाएगा. डू नॉट गो फॉर इट. अपने बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को हैम्पर नहीं करना है किसी भी हाल में. ठीक है. एंड व्हेन यू टेक टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली, आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है. करेक्ट. क्योंकि उसको बाहर से मिल रहा है. सो डू नॉट गो फॉर. सो दिस इज द एडवाइस. गो फॉर गुड फूड, न्यूट्रिशन, एंड गो फॉर द पीपल हु शेयर राइट नॉलेज. ठीक है, जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बट जेन्युइनली जो आपका भला चाहते हैं या जो जेन्युइनली आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों से आप ट्रेनिंग या फिर गाइडेंस जो भी है वो लो. डू नॉट गो फॉर ऑल दी लग्जरियस थिंग्स एंड ऑल दैट. सो कोई काम नहीं आता. इट्स जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, मेहनत, गुड ईट, गुड स्लीप, गुड वर्कआउट. दैट्स ऑल. That's true. And that's the podcast. Adarsh bhai, once again, thank you so much for being on our podcast show. Finally, mental health, physical health, हमने overall cover up कर लिया है. And definitely we will discuss some new topics with respect to health or even on any other topics in part 3 of our podcast. And I look forward to see you in the part 3 with any other new topics जिसमें हम in depth जा सकें. But before that, once again, thank you so much for being on our podcast show. Thank you so much for having me. So that's the end of this particular episode. I hope that you learned and enjoyed a lot from this particular episode as well. और साथ ही साथ जो भी आपके takeaways हैं, do share below in the comment section. और साथ ही साथ अगर आपके कोई recommendation है with respect to guest or with respect to any other topics, do share below in the comment section. And before you leave, do check out all the social media links of Adarsh Gangawane, which are given in the description section. And I look forward to see you in the next episode of the Achievers Club podcast show. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.